ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணி 2 கைகள் மடி மீது வைத்து உட்கார்வோம். இரண்டு கைகள் மடி மீது வைத்து சந்தோஷ சித்தத்தோட உட்கார்வோம். நம்மளுடைய தெய்வீக அன்னைய மிக அன்போடு பார்ப்போம். ஒரு குழந்தை நிலைக்கு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜியோட இணைப்பை கிடைத்திருக்கான்னு கவனிப்போம். 2 உள்ளங்கையில் சைத்தன்யத்தை உணர்வோமான்னு பார்ப்போம். இந்த தியானம் முழுவதும் நம்மளும் ஸ்ரீ மாதாஜி மட்டுமே. வேற எந்த விசாரமும் சிந்தனையும் ஏதும் இல்லாமல் இந்த தியானத்தை செய்வோம். அனுமதி கேட்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து இன்றைய தியானம் தொடங்கிறதுக்கு அனுமதியை தந்தருள வேண்டும் தாயே. இந்த தியானத்தில் எங்களுக்கு ஆனந்த நிர்விசார நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு ஏதும் தெரியாது தாயே. தாங்கள் தான் இந்த தியானத்தை வழி நடத்த வேண்டும். மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நம்மளுக்குள் கொண்டு வந்து மிக மரியாதையோட நம்முடைய குண்டலினியை உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்த்துட்டு மெதுவாக நம்மளுடைய கண்கள் மூடி நம்முடைய கவனம் நம்முடைய ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. உங்களுடைய திருக்கமல பாத தரிசனத்தை எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் எப்பொழுதும் தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. ஹிருதயத்தில் பரிபூர்ணமா ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருவடியை வைத்து மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய சகஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். 2 உள்ளங்கையும் சகஸ்ராரத்தில் நுண்ணதிர்கள் கூடினது கவனிப்போம். கவனத்தை சகஸ்ராரத்தில் வைத்து 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला
देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வந்து ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடா நாடியை சுத்திகரிப்போம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது வைப்போம். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய இடா நாடியில் வைப்போம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ இடா நாடி சுவாமினி. தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய இடா நாடியை பரிசுத்தமாக்கி விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஆத்மாவை விழிப்புணர்வு நிலையில் வைத்திருங்கள் தாயே. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சகசாரத்தில் வைப்போம். இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்த ஸ்ரீ கணேச தர்வ சீர்ஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि
त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण हृदम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दु उत्तररूपं नाद संधानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाधौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। பிங்களாடியை சுத்திகரிப்போம். வலது கை மடி மீது ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி வைத்து இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். முழு கவனம் நம்முடைய பிங்களா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பிங்களா நாடி சுவாமினி. தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்கள நாடியை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய பிங்கள நாடியை பரிசுத்தமாக்கி விடுங்கள் தாயே. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சகஸ்ராரத்தில் வைப்போம். பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்த ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா கூறுவோம். श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे भरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरोन पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा
अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेश कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान सूक्ष्म रूप धरि सिद्धि दिखा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संहारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस्र भजन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित रही यम कुबेर ते बाल जहाते कवि कोवित कहि सगई कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दी राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो दाहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माये जलधि लांघि जय अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे गे राम दुलारे तुम रखवाले ओदन आज्ञा बिन भय सारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डर आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे साधु अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस पर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्मी हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुन दे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान सारी
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, झूठ नहीं बंधि महा सुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नातर दय महडेरा। कीजे नातर दय महडेरा। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। இடது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இரண்டு உள்ளங்கையிலும் சமமாக நுண்ணுதல்களை உணர்வோமான் கவனிப்போம். நம்மளுடைய கவனம் நம்மளோட சுஷும்னா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சுஷும்னா நாடி சுவாமினி. தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடிக்கு வாருங்கள் தாயே. சுஷும்னா நாடியை தூய்மைப்படுத்தி இறை சக்தியோடு ஒன்றினையை தந்தருளுங்கள் தாயே. எல்லா தெய்வீக குணங்களையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களை சமநிலையில் வைத்திருங்கள் தாயே. கவனம் நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து சமஸ்காரம் வரைக்கும் ஒரு தடவை கொண்டு வருவோம். சகஸ்ராரத்தை, சைத்தன்யத்தை உணர்வோம். சகஸ்ராரத்திலிருந்து நம்மளுடைய மூலாதார சக்கரத்தை பார்ப்போம். சகஸ்ராரத்திலிருந்து வர இறை சக்தியை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்தில் வர பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா, எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. நம்மளுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் இருக்கிற ஸ்ரீ கணேசரை மகிழ வைக்க ஒரு சின்ன கணேச பஜனத்தை பாடு. गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुमन भवानी नंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन।
गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबदायक, कृपा सिंधु सुंदर सबदायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत योगी जन कर जोरे, मांगत योगी जन कर जोरे, बसहु श्री माता जी मानस मोरे, बसहु श्री माता जी मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। பிரசன்ன கணேஷாவோட அருளால் மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஆறு இதழ்கள் கொண்ட மஞ்சள் தாமரையில் அமர்ந்த ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதியே, நம்மளுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை தரிசிப்போம், வணங்குவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி. தயவு செய்து எங்களுக்கு நிர்மல் வித்யாவை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு நிர்மல சித்தத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு நிர்மல் ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி சாட்சாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக ஒவ்வொரு சக்கரங்களையும் கடந்து நம்மளுடைய கவனத்தை நம்முடைய சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்துவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ யோகதாயினி, ஸ்ரீ பிரம்மஸ்வரூபிணி, சிதானந்த ரூபிணி. தயவு செய்து எங்களுடைய சஹஸ்ர கமலத்தில் வாருங்கள் தாயே. என்னுடைய சஹஸ்ர கமலத்தில் அமருங்கள் தாயே. எங்களுக்கு சைத்தன்யத்தை உணர செய்யுங்கள் தாயே.
எங்களுடைய ஆத்ம விழிப்புணர்வு நிலையை திடப்படுத்தி எங்களுக்கு நிர்விச்சார நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. கவனத்தை சமஸ்காரத்திலே வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். இதே சைதன்யமான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்பார். ஸ்ரீ மாதாஜி 1997 ஸ்ரீ கணேச பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. Today we are going to worship Sri Ganesha. It's all said about him that he is the first deity that was created on this earth by Adi Shakti. As about his creation, you know the story. And also you know how an elephant's head was attached to it. Today, I'm going to tell something more subtler about him, Kundalini, and the Mother Earth. He was made out of the Mother Earth. With the vibrations of his mother. Now, the significance of Mother Earth, we have never understood. Now look at the Mother Earth. She is the one who produces all kinds of beautiful flowers of different fragrance, of different nature, color, heights. The trees are different. Trees, when they grow up, they grow in such a manner that every leaf of that tree gets the sun. Look at the collective sense which is given to us by this Mother Earth. We have never realized that this Mother Earth, which is giving us everything that we want, and the sun helps the Mother Earth, cooperates, coordinates with it.
To go further with it, you have seen a picture where a Kundalini is coming out of the Mother Earth and half of it is seen. So, what does this Kundalini do for us? Or what does this Mother Earth does for us? The Kundalini leaves the Mother Earth as a reflection. And what does she do within us to build us up? In which way? So it is the primordial power which is coming out of the Mother Earth. Mother Earth itself acts like a mother. She looks after you. She gives you whatever you want. And another miracle thing is that the highest tree is a coconut tree. And the coconut will never fall on any creature or any human being. That means it's all thinking, all understanding, all consciousness, all awareness is coming from the Mother Earth. But we never understand it. As it is, we take for granted. Now, what does she do for us human beings? She is the primordial power. What she does is to build in us a primordial, we can call restrictions, or primordial taboos, or primordial dharmas. For example, you see the steel is here. It has its own dharma. It cannot behave like wood. Wood has its own dharma. It cannot behave like silver. They all have their dharma and they are bound in that dharma. Everything that is in the nature has its own dharma. If you see the tiger, if you see the lion, if you see a mongoose or you see a snake, they all have their dharma, their style, their everything. It's very surprising how they are bound by it. Once in Pratishthan, I went from the other side to my bedroom. And I saw a very big snake came out of a hole. Of course, I was quite away from it, but it felt my vibration. Started running away. It fell in the swimming pool. It wouldn't come up. So somebody went down and killed him and brought his body up there. I was surprised. It was such a big one, about 6 feet, but it intertwined itself in a very beautiful pattern. Surprisingly, when it was dead. All right. Then what they did is they said that, Mother, if you leave it, it will fall in the water again, it will come to life. So what should we do? I said, let it be. Then what do you do? He said, we burn it. So they burnt the snake. But the female of that snake came out after 10 days. They said, there must be a female. And she was searching for him when suddenly somebody saw her. They killed her also. They killed her, and she also made the same kind of a pattern. I was amazed. Very beautiful pattern of the body going around like this, like this, like this, like this. Exactly the same she also made. So I was surprised. How is it that this lady knows how to copy her husband? She did it. And when we burnt her, she was finished, of course, both of them were killed. But what I felt is that animals, creepers, those who creep on other people also, every type of animal, the whole of biology I studied, I was amazed
that every type of animal has the same sample of behavior. For example, you can put the dog in the water, he'll swim, but the cat may not. See, it's a thing that is built in the dharma, what I call it the primordial taboos. We have in the same way primordial taboos built within us which are dharma. A human being has to be like that. If he tries to be something else, something goes wrong with his life. It's like, say, if you have glass, you drop it on the ground, it will break. That is the dharma. In the same way, when human beings start deviating from the line of dharma, they get into trouble. But it's only human beings who can do that. They can only cross over these taboos, these primordial taboos, and can become horrible. You see a person, sometimes I wonder what's wrong with him. He has a nice home, very good wife, everything. Then he has a keep. What is the need? For man, it is primordial that he should have only one wife and one husband. It's a taboo. As soon as you deviate from that, something goes wrong. Now, who punishes or who corrects or who destroys is this primordial power which we call as Param Chaitanya. If you can understand that it's a structure, say this is the structure of this hanger, now you want to break it, you can break it because you are human beings, but it will be broken. As simple as that. We have to understand we are human beings and we cannot do things which go against our dharma. Now, why the dharma? Dharma has to be there for our ascent. Now man, in his intelligence and his progressiveness, thinks that anything he does, what's wrong? Especially in the West, this is very common. But I must say for the Aboriginal people, or people who are, I don't know I should call Indians Aboriginal or not, but those people who were made aware of their primordial taboo somehow. As the animals know what is bad for them. And that knowledge was there with Aboriginals. Today we are here with Australians. And in Australia, Aboriginals are so many. I was surprised most of their words were Sanskrit. So might be they might have got it from India, or maybe they have gone there from India. So many words they have got which are Sanskrit. So I started thinking about them. Normally Aboriginals, say in India we have Aboriginals. We call them Gond, Kurku, Bhil. We had a lady who was a maid with us. Gahinabai was her name. She's an excellent cook, but she had her maryadas. All the time, like if my father came, she would immediately cover her head and go in the other room to respect him. Nobody told her to do that.
Their marriage system was also very surprisingly good. And their relationships with children also was very good. Somehow or other, in my childhood, I met many of them. Because I also had a habit of going to the jungles where I used to meet them. And I was surprised. They would not drink. This I'm telling you about 60 years back, maybe more. They would not drink. Very lajjashil means shame of everything. Matter of sort of prestige for them was important. They would never steal anything. And I was really very impressed how these people were so dharmic, so good and happy. They lived in huts, they didn't mind, but they were very clean and neat people. It is now changed. The same people are changed so much. I mean, they were like sacred people, I tell you. Holy people. They worship Mother. They worship Mother Earth. Nothing else. And I asked this lady, why do you worship Mother Earth? She said, she gives us everything. She is a just mother. We live in the jungles. She looks after us. And she is the most conscious person. He knows that we are there and she has to look after us. Even to take out some leaves from the trees, they used to think about. But then the missionaries came, they converted them, they gave them skirts and blouses, I don't know what all they did. But Gahinabai did not. She said, what is this? Why should I wear a dress like this where the whole body is exposed? No, I'll wear a sari. I can never go. Why should I wear this kind of a useless dress? But when they met with these so-called advanced people, so many of them started living like them. They said, you have no freedom. You are just bound by something, by some. But actually, they were bound by the sacredness, by the divine understanding. And then they started changing. She was all right, her husband was all right, but her son started drinking. This is the beginning of the end. Then gambling. And all other sorts of things he started. And her grandson started going to prostitutes. And the idea was only that we are free. What's wrong? Now these primordial taboos are in you, built in. They are there. These are existing maybe in a potential state. Maybe you have curbed them down. Maybe you have turned them out. But they are there. All the time they are there. And that's what we say, that you are leaving the maryadas. Or else we say that you are insulting Sri Ganesh. So when Mother created this universe, first deity was Sri Ganesh. Auspiciousness was created. Now we don't understand what is auspiciousness. Auspiciousness is a complete understanding of primordial restrictions and also of the protocol. For example, in India, we all used to do that.
though I was in a Christian family, that before touching the Mother Earth, getting up from the bed, we used to say, "Oh Mother Earth, please forgive us, because we are touching you with our feet." So respect for the Mother Earth and for nature is built in within us. It's part and parcel. We are part and parcel of this whole, we can call it a whole universe. But when you get into this nonsensical idea of freedom, then you are leaving your Mother Earth. Your gravity itself reduces. This Mother Earth has to teach us. While we are plundering, now there's everything, ecology, people are trying. Whatever is outside is also inside. If you want to exploit your mother inside, or if you want to trouble your mother inside, you can also trouble this Mother Earth. Now what has replaced our understanding is very simple, is that we are paying more attention to money. If you can cut a tree, say, to get money, then it is hurting the mother. But if you are cutting a tree for beautifying her, then she is happy. Her discretion is so great. See the way she produces flowers. Different types of flowers. In different countries, different types of flowers. Like me, I saw in my country that flowers are extremely fragrant, very fragrant. And she understands so much. Once I went to Australia, and this flower we call hibiscus, it's a red flower, which becomes pink and then red. Imagine, it becomes first pink and then gradually it becomes red. Even the sunflower goes on turning its face with the sun. Now how can you say there is no connection between a sunflower and the sun? Automatically it goes on changing. So these hibiscus flowers are the flowers which we use to worship Sri Ganesh. And the program was to worship Sri Ganesh. On the way I saw so many trees of hibiscus just flowering. I said, at this time, so many flowers I saw. I said, I think you better get these flowers for the puja. And when I arrived in the hall, all the Sahajyogis had bought hibiscus on their own. I never talked to them, just on their own. They didn't know that it is to be used for Sri Ganesh. But Mother Earth herself created at that time. This is the time of Sri Ganesha when you should get hibiscus. It's very remarkable how the nature is so much within us, and how this whatever is within us guides outside and receives the blessings. We are not something separate. This Mother Earth is our home. We have a home in her and she has a home within us. I said today that for Sri Ganesha, he had the body of the clay, just ordinary. So you can imagine, you can really think of it, how this whole universe has created us. All of it is within us.
And when we try to hurt something, then we are hurting ourselves. The intelligence of Mother Earth I have seen from my childhood. It's such a beautiful thing to know the nature and the Mother Earth. That's why all the saints in India especially used to go and live in the forest. Only in the forest you could see clearly how this primordial bondage was absolutely obeyed naturally by the nature. For us it is difficult. We are rather free people. So simple things like a woman should be always covered properly in her body, because she respects her body. She respects her chastity. But if you tell this to somebody, they won't listen. As you see the evergreens, they are always clad. No leaf prop falls off. I call them as the females. And the other trees, deciduous, they do lose their leaves. So I call them as men. Because they are men. Here the other way around, I have seen, if I used to go to any party, some or other they thought I was a very serene person. You meet somebody, immediately the man will button up himself. And the women will open themselves. Said the whole brain from here has gone to this side and this one has come this side. It's so stupid. But even Mrs. Thatcher this said that it is our culture that women must expose their body. What? Are they prostitutes or what? So it craze of exposure of body has become so strong now that even in India, if not on the streets or in the household, but in the cinema films, you see women. Really, this never happens in India. What you see in the films never happens. If they start wearing dresses like that, so many people will throw stones on. Then all other sorts of, I shouldn't say clumsy, but very grotesque thing happen, like, I can't understand, man having relation with man, woman having relation with woman, and children, and this and that and that. We didn't know this in India, didn't know. Why is it happened here? I don't think 50 years back they used to do that also in these countries. Why we have given up our sense of shame and this kind of nonsense that has come into us. I think must be some bhoots in them or badhas in them or something horrible, but this is absolutely unnatural, absurd. Then a married man having eyes on unmarried women, and unmarried men are having relations. All kinds of things, people. You won't believe this doesn't happen in India. Really, I tell you, it is now sort of spread out, but still I would say in good families, don't have it. Somebody told me there's AIDS in India. Yes, because they take bath in the river. If they stop taking bath in the river, this will stop. I was a medical student, I have studied, and I came from a very open family. I never knew these things that men can do. I mean, it's stupid.
Even in the lunatic asylum in India, we have never heard of such reports. This is us. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக கண்களை திறந்து 2 கைகளும் கூப்பி ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி வர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.